Welcome to the live session. Okay. So in this live session, we are going to learn about some parts of the universe related to structure of the universe, composition of the universe, and then shape or geometry of the universe. So I'm going to start. Meanwhile, you will be joining. So here we have, in today's session, we have first of all, first part of the session is structure of universe. Then we will be dealing with composition of universe, and then the last part of this lecture, it is geometry of universe, right? Now those who are live, so they can invite their fellows to this live session, so that they also get some benefit. And it is also requested to you that please participate actively. When you participate, you are because you are live, and when you are live, so you have to do something. And when you do something, so those things are the activity you involve, so that becomes yours. ठीक है, तो इन चीज़ों को समझ लें. चलो शुरू करते हैं. So first part, that is structure. So when it comes to structure of the universe, so at large scale it includes, जब हम large scale बात कर रही है, large scale क्या हो जाता है इसके साथ? Okay, at one side it has voids, on the other side it includes elements, right? Now voids are empty spaces, right? Empty spaces, and primarily dark matter and dark energy are the constituents of these empty spaces, which are exactly voids. ठीक है, voids जो कि डार्क मैटर पे जो है ये बिलीव किया जाता है कि ये एम्प्टी स्पेसेस हैं, और हमारे हिसाब से इसलिए एम्प्टी स्पेसेस है क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी अप्रोच से दूर हैं, अभी तक हमने ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है जैसे कि हमने वी हैव कवर्ड देम इन द फर्स्ट लेक्चर. ठीक है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की कॉन्सेप्ट में हमने ये चीज़ें बात की है कि उनकी नेचर क्या है और बिहेवियर क्या है इन यूनिवर्स. आई एम टॉकिंग अबाउट डार्क एनर्जी एंड डार्क यूनिवर्स. ठीक है, and I hope that everything is going well. There's no problem either from my side and from your side, neither from your side, right? Now elements are technically we call it galaxies. ठीक है, क्योंकि गैलेक्सीज जो है ना ये यूनिवर्स के लार्ज यूनिट है, इस वजह से हम इसको गैलेक्सी कहते हैं. आगे जाके जो है ना इसके टाइप से इसमें हम अब डिटेल में बात करेंगे. तो ये एक यूनिट है, लार्ज यूनिट ऑफ द यूनिवर्स है. ठीक है, तो एलिमेंट्स जो है ये ज़्यादातर, और ये जो है ना अगर हम और भी इसको थोड़ा इलेबोरेट करें तो ये जो है ना जिसको हम
नॉर्मल मैटर या ब्रियानिक मैटर कहते हैं, ब्रियानिक, ये वही चीज़ है। और जो एम्प्टी स्पेसेस है ये तो हमने बात की ना इंट्रोडक्टरी क्लास में कि ये क्या है, आपके डार्क एनर्जी है और डार्क मैटर है, ठीक है, ये इस पे मुश्तमिल है, जो कि इनविजिबल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स है, while this is visible part or observable part of the universe. Is that clear? So that's all about structure of the universe. When it comes to the composition of universe, तो ये भी नून चीज है, ये composition की बात कर रही है, तो again that is you have normal matter which is also known as ब्रियानिक मैटर, ठीक है, आपकी गैलेक्सीज है, आपके सन है, आपके सोलर सिस्टम्स है, आपके पास जो है फिर जब हम अर्थ की तरफ आती है तो अर्थ की जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम में प्लैनेट से और फिर माइनर प्लैनेट से आपके पास जो एस्ट्रॉइड से मीटेरॉइड, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। यू हैव डार्क मैटर एंड यू हैव डार्क एनर्जी, दीज आर द components of atmosphere, universe at large scale, ठीक है, याद तक ठीक है ना। चीजें तो ठीक है, एंड आई डोंट सी एनी कमेंट्स हियर। बाकी तो लग रहा है कि ये आवाज भी ठीक है, और स्क्रीन भी विजिबल है, आई होप सो। सो कमिंग टू द लास्ट पार्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अब इसमें आगे जो है ना, अगर हम बात करें यहाँ ये स्ट्रक्चर कंपोजिशन की, तो इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं है, बस जनरल बात है, आगे हम नहीं जानते, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हम जो है ना 5 नंबर का सवाल आता है, हमने उसको डील करना है, तो इस वजह से इसमें कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर आप जाना चाहते हो तो आगे कुछ रिवील भी नहीं की गई अभी तक। सो दैट्स ऑल। When it comes to geometry or shape of the universe, right? So we understand 3 scenarios so far, ठीक है? And we explain these 3 scenarios in terms of Einstein जनरल रिलेटिविटी थ्योरी, ठीक है। क्या बात कहते हो बंदा, IN आइंस्टाइन्स जनरल, इसको बड़ा करना चाहिए, जनरल रिलेटिविटी theory. So according to this theory, let's say we have space, this is space, let's suppose, and then you have mass, right? कोई भी mass ले लें। So in effect, let me make it simple for you. ये आपका मास हो गया, ठीक है। In effect, when we combine both space and mass, ठीक है, so according to this theory, this mass causes this space to what? कर्व, इसको नीचे दबा देते हैं, कर्व पैदा करते हैं, कर्वेचर जो है ना बन जाते हैं स्पेस में, क्योंकि स्पेस, हम स्पेस की बात कर रहे हैं ना, क्या कहते हैं इसको, यूनिवर्स की बात कर रही है। और यूनिवर्स में क्या है हमारे पास जो है ना लार्ज बॉडीज है, गैलेक्सी से लेकर आगे जाके जो है ना मीटियोर्स या कॉमेट्स तक,
इससे भी छोटे हो सकते हैं। सो दिस मास causes दिस स्पेस और यूनिवर्स टू कर्व। ठीक हो गया यहाँ तक? इस बात को समझो। अगर ये आप समझ गए ना तो जान लो आप टॉपिक पे उबूर हासिल कर गए। ठीक है, ये मास जो है ना रिलेटिव थ्योरी कहते हैं कि ये किसी भी स्पेस या यूनिवर्स, हम बस जनरल लेते हैं और हमारा मकसद ये है कि हम ये डिफाइन करें थ्योरेटिकली कि यूनिवर्स के शेप या ज्योमेट्री किस तरह है। हमारा मकसद यही है और वो हम थ्योरेटिकली करनी जा रही है। एंड दैट्स ऑल। कोई भी मास है और ये स्पेस में मौजूद है, सो दिस थ्योरी सेज दैट मास causes द स्पेस टू कर्व। इसमें कर्वेचर बन जाते हैं, नीचे दबा देते हैं, पुश करते हैं। ठीक है, if such is the case, right, I mean that if space is curve, ठीक है, इसको और भी स्पेसिफिक करते हैं। if universe is what? curve। अगर यूनिवर्स कर्व है then we consider three possibilities। फिर हम जो है 3 पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करते हैं कि या तो ये है, या तो ये वही है, या तो ये वाला है। और वो किस तरह है वो हम अब करने जा रही हैं। क्लियर है? अच्छा, so in this context, in 3 possibilities, number first we consider plus that universe is plate, or the universe can be open, or it can be closed। 3 सिनेरियो बन गए हमारे पास। ठीक है, पहले वाले को देते हैं। अगर ये प्लेट है तो क्यों है? सो लेट्स आंसर इट। बट बिफोर वी गो टू थ्रू दिस पॉइंट वी हैव टू डिफाइन सम स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज, वी मस्ट नो देम। ठीक है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे सो दैट वी मूव अहेड। We have this sign or this symbol, जिसको हम शायद आप जानते हो ओमेगा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओमेगा। ठीक है, so when this sign or omega equates 1, when omega is equal to 1, then the universe is plate, right? When omega is greater than 1, then universe is open. When omega is less than 1, then it is closed. That's all. Now what is omega? So omega is what? It is the ratio of actual density and critical density. Critical density. Is it clear? यहाँ तक ठीक है? ओमेगा क्या है? ये जब आप एक्चुअल डेंसिटी और एक्चुअल क्रिटिकल डेंसिटी की रेशियो लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू आती है एंड इट इज ऑब्जर्वेबल वैल्यूज पार्टिकुलरली रिलेटेड टू फिजिक्स। ठीक है, ये कैलकुलेट की गई है
लेकिन हमने जो है ना इसको दर्द नहीं बनाना है, क्योंकि हमने जो है ना जस्ट 5 नंबर का सवाल करना है, हमने इसमें जो है ना रिसर्च नहीं करना है, ठीक है। और इतनी जो है ना लॉन्ग और लेंथी चीज़ें भी नहीं पूछ सकती कि इसमें जो है ना आगे जाके फिर कैलकुलेशन वगैरह थी, आपके पास टाइम नहीं होता और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। Actual density and critical density. Now, what is critical density and actual density? So, critical density is what? It is the stage of balance of the universe. ये हमें जो है ये दिखाता है, ये रिवील करता है कि ये क्या है, ये universe is not expanding anymore. That's called critical density. And actual density is related to either the possibilities, either it is flat, open or close. कौन से वाला है? मैं डिटेल में बात इसलिए की कि हम जो है ना इन चीज़ों को अब अप्लाई करेंगे इन 3 पॉसिबिलिटीज पे। सो होपिंग दैट यू आर क्लियर नाउ, ठीक है। अच्छा, पहले जो है इसको लेते हैं फ्लैट यूनिवर्स। अगर यूनिवर्स फ्लैट है, ठीक है, सो इट मीन्स दैट एक्चुअल डेंसिटी हम पहले जान चुके हैं, मैं इसको ए सी लेता हूं, एक्चुअल डेंसिटी सॉरी एडी है। एक्चुअल डेंसिटी क्या है? ये इट इज इक्वेटेड टू एक्चुअल क्रिटिकल है, क्रिटिकल डेंसिटी, ठीक है। एक ही हो गया, एक ही हो गया, ठीक है। अब ये क्यों है? सो इट रिफ्लेक्ट्स दैट यूनिवर्स हैज जीरो कर्वेचर। किधर गया वो, ये वाला, let me maximize it. अगर प्लेट की बात कर रहे हैं तो ये वाला हम कंसीडर करते हैं, ये प्लेट है, इसमें कर्व नहीं है, यू कैन इजीली इमेजिन फ्रॉम दिस इमेज, ठीक है। इट हैज जीरो कर्वेचर। And another related thing to this context, that the angles within the triangle adds up to 180 degree. Suppose you have a triangle, ठीक है। अब ये अगर ट्राइंगल की बात कर रही है तो ये एक एंगल, ये दूसरा, ये तीसरा, सारे कितने होगा? ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तीनों को आप जमा करें तो आपके पास आ जाएंगे 180। तो अनदर सिनेरियो बन गए कि आपके पास जो है ना एंगल्स जो है ना, सारे एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये हम आप जाके जो है ना कंपेयर करेंगे, सो यू विल बेटर अंडरस्टैंड, ठीक हो गया। अच्छा, सो दिस रिफ्लेक्ट्स दैट दिस टू पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है, एक दूसरे की पैरेलल है ना, ठीक है, will remain undisturbed, and the universe has no bonds because enough mass, या हमने बात की थी ना, या enough mass, because the universe has enough mass, or it exists, enough mass exists to stop expansion over time. कोई भी टाइम आएगा, चाहे बिलियन ईयर्स आफ्टर हो या 5 साल आफ्टर हो, लेकिन ऐसा टाइम आएगा और सफिशिएंट मास की वजह से, ठीक है, कि ये एक्सपेंशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लेट वाली बात है। अब अगर हम दूसरी सिनेरियो ले ले, विच इज ओपन यूनिवर्स, सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट ओमेगा greater than 1 in terms of actual density or critical density. So here your actual
density is less than critical density. ठीक है, we now better understand what these terms are. ठीक है, so in this case, ठीक है, ये वाली चीज है, you have negative curvature. आपके पास you can imagine या from this image, ठीक है, आपके पास कर्वेचर क्या है, वो नेगेटिव है, नेगेटिव कर्वेचर. ओके, क्यों है? बिकॉज द बाउंड्री एग्जिस्ट इन दिस थिंग. सॉरी, इट हैज नो बाउंड्री. ठीक है, इसमें बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज insufficient mass has insufficient mass exists to stop the expansion, which lead to infiniteness of the universe. ठीक है, यहाँ आपके पास जो है ना मास जो है ना वो तो है, लेकिन insufficient है as compared to plate. यहाँ sufficient है, किसी भी वक्त जो है ना इसको स्टॉप कर सकता है. ठीक है, और इसी सिनेरियो से हमने ये चीजें जो है ना ये टर्मिनोलॉजीज बनाई हैं. इज इट क्लियर? इन टर्म्स ऑफ एंगल्स विद इन अ ट्रायंगल्स, हियर when you add up all the angles within the triangles, so it becomes less than 180 डिग्री. ठीक है, या जो है ना इसका मतलब ये है कि आपके ट्रायंगल में जो है ना ये कंपैरिजन में हम लेते हैं. ठीक है, कहा कि प्लेट ओपन और क्लोज, उसके कंपैरिजन में हम लेते हैं. तो ये आपके पास क्या हो गया, मे बी वन एंगल हैज लेस देन 60, इसको आप 50 कर ले. ठीक है, तो फिर आपके पास जो है ना समेशन जो है ना 180 की लेस देन आती है, चाहे 160 सॉरी 170 160 150, एंड दिस वे यू गो बैकवर्ड बैक. ठीक है, अच्छा, सो इसमें क्या मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें नेगेटिव कर्वेचर है. नेगेटिव कर्वेचर इस वजह से है कि वी हैव इनसफिशिएंट मास. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इनसफिशिएंसी द यूनिवर्स मे लीड टू इनफाइनाइटनेस. यहाँ से जो है शुरू होता है और यहाँ तक आता है. ठीक है, और इसकी बाउंड्री भी नहीं है, ओपन है ना, इसमें कोई बाउंड्री वगैरह नहीं है. और दूसरी बात यह है कि इसके जो एंगल्स की अगर हम बात करें विद कंपैरिजन टू अदर टाइप्स ऑफ यूनिवर्स, शेप ऑफ द यूनिवर्स, राइट, सो इट्स एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री. ठीक हो गया. एंड द लास्ट सिनेरियोज में एक जो है ना वो क्लोज है. ठीक है, सो हियर यू कैन सी इजीली वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड दिस टर्म दैट इट इज ओमेगा व्हेन ओमेगा इज लेस देन 1. सो इन कंट्रास्ट योर एक्चुअल डेंसिटी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल डेंसिटी. ठीक है, नाउ कम टू दिस image. It shows what? Positive curvature. Positive curvature. Why? Because it has boundary. इसमें boundary है क्योंकि ये मतलब कहीं ना कहीं तो इसमें मतलब क्या कहते हैं लिमिटेशन, इसमें किसी वक्त भी आ सकते हैं टाइम के साथ. ठीक हो गया. Because you have more than sufficient mass in this case to stop the expansion. यहाँ आपके पास insufficient mass था, यहाँ जो है ना insufficient mass था, और यहाँ more than sufficient mass है. और जितना mass बड़ा है, greater है, ठीक है, उतना ये मतलब पुश करेगा ऊपर या यूनिवर्स को, ठीक है, या स्पेस को, कि उसमें ज्यादा कर्वेचर बन जाए. ठीक है, तो इस वजह से जो है ना फिर जो है ना यूनिवर्स क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज जो है ना कंपाइन हो जाते हैं, लिमिट हो जाते हैं. ठीक हो गया यहाँ तक. एंड हियर एज रिगार्ड्स टू एंगल्स ऑफ द विद इन अ ट्रायंगल्स, सो इट कम्स टू बी मोर देन 180 डिग्री. क्या आपके पास
एंगल्स कितनी आ गई, मे बी वन ऑफ देम यू हैव मोर देन 60, ये 70 ले ले या 90 ले ले, तो फिर ये डिग्री जो है ना 180 से ऊपर हो जाते हैं. So for your understanding, let me take it simple for you. ठीक है, मैं इसको सिंपल बना, एक एनालॉजी लेते हैं. रॉकेट तो आप जानते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, रॉकेट. So when you fire a rocket from earth, ठीक है, कोई भी अर्थ से मतलब किसी से अर्थ की किसी भी जगह से आप रॉकेट को फायर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जो स्केपिंग वेलोसिटी है ना इस रॉकेट की, वो तकरीबन 11.186 किलोमीटर पर सेकंड है. ये वेलोसिटी है, या इसको हम क्या कहते हैं, स्पीड भी कह सकते हैं या वेलोसिटी है. स्केपिंग वेलोसिटी है कि आपको इतना जो है ना वेलोसिटी या पावर या स्पीड चाहिए कि आप क्या कहते हैं, अर्थ की ग्रेविटेशनल इफेक्ट को काउंटर कर सके. सो दैट इज 11.186 किलोमीटर. इज इट क्लियर? बात समझ में आती है यहां तक? ठीक है. सो एट द स्पीड ऑफ द रॉकेट इज लेस देन, अगर यहां फिर जो है ना, क्योंकि यहां 3 सिनेरियोस यहां भी 3 सिनेरियोस बना लेते हैं, ठीक है. एट द स्पीड ऑफ द रॉकेट इज ग्रेटर देन 11.186 किलोमीटर पर सेकंड से क्या है, कम है, ठीक है, जो कि स्केपिंग वेलोसिटी है. देन द रॉकेट विल, क्या हो जाएगा इसके साथ, रॉकेट फॉल करेगा, गिरेगा, क्योंकि स्केपिंग वेलोसिटी कम है, मतलब जितना इसको फोर्स चाहिए उससे कम है. जब कम है तो ग्रेविटी को काउंटर नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता, ये फॉल करेगा. और ये हमें बताता है कि ये आपका क्लोज यूनिवर्स एक एनालॉजी बनती है, ठीक है. अगर स्केपिंग वेलोसिटी जो है ना, ये क्या है, ये इक्वेट्स करते हैं 11.186 किलोमीटर पर सेकंड, then we expect that the rocket will leave Earth with the speed reducing with time. ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर जो है ना रॉकेट जो है ना लिफ्ट करेगा, लेकिन जो इसकी नॉर्मल स्पीड है और टाइम के साथ जो है ना ये अपना स्पीड कम करेगा, क्योंकि ये नॉर्मल है, इसकी इक्वेट करते हैं ना, ठीक है. सो इट विल लिव अर्थ सरफेस ठीक है, with reducing velocity, ठीक है. ये इस हिसाब से ये लिप करेगा, मतलब गिरेगा नहीं अर्थ सरफेस में, ठीक है. एंड द थर्ड सिनेरियो कैन बी if the escaping velocity greater than 11.186 kilometer per second, then we expect that rocket will escape the earth more quickly. यहाँ जो है ना अर्थ के रॉकेट क्या करेगा, रॉकेट जो है ना escape करेगा, उड़ेगा, ठीक है, more quickly. Why more quickly? Because its escaping velocity is more than required. तो ये वाला पेड़ बताता है कि ये आपका ओपन यूनिवर्स है और ये वाला प्लेट है, जो कि नॉर्मल चीज है, हमें दिखाता है. प्लेट
close and open, and that's all about this topic. I hope you get the idea about this shape of the universe. If that is the case, write in the comment box that I understood well. Furthermore, you can ask questions related to this topic or related to anything else in the subject so that I can address. If you have no questions, you can also write that I'm clear. ठीक है, तो इस तरह ये चीज़ें आपने करनी है. अच्छा, it seems that you have no question, so I should leave now, क्योंकि आज का ये सेशन था जो ख़त्म हो गया, एंड देन फिर कल देखते हैं. तो थैंक यू.